Okay, now let's start how to install DHCP server in Windows 2012 server. ये बात मैं करवाता हूँ, थोड़ी जगह छोड़ दो इसके लिए. So what do you need to do? Open the server manager. Click on manage. Click add roles and features. Okay, again you need to click next 3 times. And from this role list select DHCP server. Okay, and click on add features. And click next. Again click next. Again next. And click install. Right? Okay. ये भी ऑलरेडी किया हुआ है हमने, अभी करेंगे. नाउ एट दिस टाइम इस मशीन का अगर आप आईपी चेक करो क्लाइंट का, सो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 169. एंड व्हाट टाइप ऑफ एड्रेस इज दिस? One 169.254. What we call it? नॉट क्लास. इस ये किस तरह का एड्रेस है, क्या कहा जाता है इस एड्रेस को? दिस इज एपीपा एड्रेस, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइनमेंट. ये क्यों आया है? बिकॉज इस सिस्टम में हमने स्टैटिक आईपी नहीं दिया है. DHCP सर्वर जो है उसे अभी हम इंस्टॉल कर रहे हैं, मीन्स नेटवर्क में अभी एग्जिस्ट नहीं करता है वो. दैट्स वाई सिस्टम ने खुद के लिए आईपी कॉन्फ़िगर किया है 169.254 की रेंज पे, एंड वी कॉल इट एपीपा एड्रेस. Okay, now say this: installation is succeeded, configuration is required, right? So click on complete DHCP configuration. And then just click next. Okay, click commit. Right, now configuration is done. Just click close. Close this wizard window and also close the server manager. Now we need to define the scopes in the DHCP server so that your client will get the IP address automatically. So for this, open run and type DHCP mgmt.msc. Press enter. This will open your DHCP manager. Okay. Now what do you need to do? Expand the server name. Okay, we already have the address.
Okay, I am going to remove this scope and we are going to configure this again, right? Because it is already configured. Okay, I am deleting this scope, right? And now what you need to do, expand or just right click on the IPv4 and select new scope. Now what is scope actually? Inside the scope we will define the pool of IP addresses, right? Like the range of IP addresses which will be provided or allocated to the client systems dynamically or say automatically. Just click next, then you can define the scope name, so it can be any name. Description is optional, then just click next. Now start IP address, so let's say 10.17.3.220 and ending IP address 10.17.3, let's say 250. Then you need to define the subnet mask, so let's say it's 25. You can define the length or you can directly write down the subnet mask also, right? This depends on the number of devices in your network. तो डिफ़ॉल्ट कन्फिग्रेशन के साथ चलो, देन 8 बिट्स ही रहने दो बिकॉज ऑफ ये A क्लास का IP एड्रेस है, तो डिफ़ॉल्ट लेंथ इसका 8 होता है, 8 बिट्स नेटवर्क आईडी, ठीक है? तो अभी मैंने इसको 25 बिट्स की नेटवर्क आईडी दी है, ठीक है? लाइक 126 क्लाइंट्स आप कनेक्ट कर सकते हो इस कन्फिग्रेशन के साथ, ठीक है? ओके, देन क्लिक नेक्स्ट. देन यू कैन ऐड एक्सक्लूजन्स, लाइक जो रेंज आपने डिफाइन किया है, अगर उसमें से कुछ IPs आप रिज़र्व करना चाहें या कोई IP की रेंज आप रिज़र्व करना चाहें तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं. बट एट दिस टाइम आई एम नॉट एडिंग एनी एक्सक्लूजन्स, सो सिंपली क्लिक नेक्स्ट. नाउ दिस इज़ द लीज ड्यूरेशन. In the wired networks, lease duration is by default 8 days, right? You can configure it according to your need, right? And in the wired networks, by default it is 6 hours, right? Now lease duration actually इसका मीनिंग क्या है? आफ्टर द 8 days क्लाइंट IP जो है वो रिन्यू होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है? अदरवाइज विद इन द लीज और आफ्टर द लीज आप कभी भी इसको खुद भी रिन्यू कर सकते हैं. IP_config/renew कमांड प्रीवियसली पढ़ा था हमने इसको. सो जस्ट क्लिक नेक्स्ट, देन DHCP ऑप्शंस, go with the default configurations, just click next. Now router, default gateway, right? So you can define the default gateway address, type the default gateway address, it is the address of your router device, and just click on add and click next. And you can also bind your DHCP server with the DNS. So you need to define the server name, let's say like server1.example.org. Type your server name and click on resolve. Okay. We don't want this address, so I'm going to remove this address. See how I will do it. Open the DNS server, go to this, and I'm deleting this one. Yes, done. Okay, right? So refresh it, close it,
remove this IP. Again click on resolve. What is this? Okay, remove this one. I don't want that address. Okay, I'm going to type the address 10.17.3.215 and click add. Right, it's done. Now click next. Okay, Win server is not required, so we are leaving this section. Just click next. Now do you want to activate the scope? It's yes. Click next and just finish it. Now you can check your address pool, your address leases, reservations, scope options, policies. And now let's go to the client side, and I'm going to renew the IP. So it's IP config /renew. ये कमांड्स आपको पता है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं इसको. Okay, I'm stopping this one.